there is a mindset in people कि धंधा खाली गुजराती मारवाड़ी यही कर, जिसको नया धंधा बिठाना है तो उसको पहले तो यही है कि कस्टमर कहाँ से मिले. So business is everywhere. The world is changing. If you stop one, you will be left behind. मैंने कभी सोचा नहीं था कि बेंगलोर से कस्टमर मुझे मिलेगा. Last week we had supplied to one customer from Kolkata. Yeah, giving solution to customer is important. Money making should not be our goal. That is our thought. That of business also difficulty comes. How to tackle it, how to overcome it. That is a part. When it comes to businesses, we are mostly clueless. Like, क्या करना चाहिए, what exactly goes through the business, and what it takes to run a business. So today we decided to have a new series, and in this series, what we are planning is that we will be visiting businesses, understanding their requirements, understanding वो लोग ने actual में start कैसे किया, and then how they expanded, what are the marketing requirements, and then how they took off from there. So this is Akash Parab from Nova and Naya, and this series is Decoding Businesses. So here we are at Bharat Hardware NX, and we'll try to go and see कि ओनर के साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं क्या. हाय सर. हेलो सर. मुझे ना आपके ओनर से बात करनी थी क्योंकि आपका बिजनेस बहुत यूनिक लग रहा है और मुझे एक छोटा बाइट चाहिए था उनका कि कैसे उन्होंने ये सब पूरा सेटअप किया. ओके, आइए सर, मिल जाता हूँ मैं यहीं पे. सर हियर मीट मिस्टर धर्मेश भाई. हेलो ना. हाय सर, आई एम आकाश. हेलो. एंड I am from Nova and Naya, and we have made a new series called Decoding Businesses. ओके. So इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, we visit businesses. ओके. हम लोग ये जानते हैं कि उनकी स्टोरी क्या है, उन्होंने पूरा सेटअप कैसे किया, how they build a business, उनकी लेगेसी क्या है, उनका USP क्या है, और वो मार्केटिंग में क्या क्या करते हैं जो उनको बाकी क्राउड से अलग करते हैं. ओके. So I would like to have some conversation with you if you have say 15 minutes of your time. Yeah, sure. Definitely. You are welcome at our shop. Today we are at Bharat Hardware NX and we'll know more about this place, what's its speciality, what it does for marketing, and also थोड़ा और डिकोड करते हैं क्या था कि बिजनेस अगर हम लोग कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए एंड ऑल, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. So we have Dharmesh bhai over here and I'm handing it over to you. But first, before we dive in, I would like to know the story of yours, like how you thought of starting this thing. Yeah. So I want to start with the beginning of it. See, if you will start from the beginning, this business is not set up by me. Acha. It's my forefather business. It's around 44 years old firm. Oh, almost 4 decades हो गया इसको. We are the third generations. And my father and my uncle, his brother, they both started Acha. around 44 years back. They started over here in Dombivli only? Yeah, in Dombivli only. And from the past 13 years, I have been separately doing this hardware. Oh. The reason is that we have to उन्होंने जो स्टार्ट किया था, sorry I'm cutting you. Yes. उन्होंने जो स्टार्ट किया था, was it into the same hardware that you are into? No, or it was different? a mixed hardware. At Achha. that time, we were selling electrical wires, we were selling handles, we were selling paint, we were selling chuna, which is used in the raw material as a paint. Paint, हाँ. And we were selling जो रैक पकड़ने का पिंजरा रहता ना, वो भी हम बेचते थे. अच्छा, मतलब everything. Because we were general hardware suppliers. हाँ. ठीक? हाँ. At that time, that was the trend. बराबर है. वो need of the hour था. करिए. हाँ. And then the industry changed dramatically. We expanded our business. Then my elder brother came in the business. Maybe around 30 years back, he came, jumped in. अच्छा. Then after 5 years, I jumped in. And now even my elder brother, younger son is in the same business. Okay. So it's our 4th generation. We expanded our business and we did it as per the times. Nice. So then now this is a separate division. Yeah, this is a separate division. What we did, we separated, but we were never divided.
That is main thing. We are having the same client base. We help each other. We always support each other. He is having an electrical industry. He is having an electrical lighthouse, while I am doing hardware business. Now coming to the hardware point, there are plenty of things which comes in hardware. Even the sanitary part comes in the hardware. Oh हाँ बराबर है. Null and all the things. So many people मुझे पूछते हैं कि अरे धर्मेश भाई वो नल है क्या? Actually I am in the specially furniture hardware section. Mine is an fancy hardware shop. I am having a showroom. You can see it. And we deal in specialized furniture fittings and fancy hardwares. So we can call it more like a luxury hardware. Luxury hardware, yeah, exactly. Because the fittings and all that I'm seeing over here, I have not seen that in common houses. See, from the past 10 years, this industry is in demand. And there was a need in Dombivli. That is true. And the thing is that we are passionate about exploring things. That we are. So I started here around 15 years back. Okay. I started with one of the single gala. This is the second part of my showroom. This just started before 2 years. We expanded this. Nice. So all the journey started from our founder members. And then we just... From there you all took off. Yes. Great. So in that now we also touched in like what USPs are there of your shop. Like unique kya hai? What is the core of your business in that way? If you See, go them? core, if you tell them, we are having some core values. My father Mohanlal Thakkar and his brother Waljibai Patel, they taught us many things, like that of being if you should push your business, if you want to grow, there should be a teamwork, there should be a discipline, be honest with your customers, and be transparent. Be transparent with your customers, with your business colleagues. These are the core things which they taught us, and still we are following the same. So I'm asking this question to you now. Like, can you name one quality which was there in you 10 years back, and over the line, like 10 years down the line, Before 10 years, na? that thing hasn't still changed. It has still been the same. What is that one special quality you feel? There is one thing in common which is still there in me. Before 10 years, na, I was still learning the hardwares. And right now, na, I'm still learning the hardware. So that learning part has not gone. At that time, suppose I was in the 11th standard. Now I have completed my graduation and still learning. I'm still learning something. Truly speaking. That is great thing. That वो सीखना आपने बंद नहीं किया, वो आपने कंटिन्यू रखा तभी से लेके अभी तक. तो now if you go to see when it comes to marketing, like जब आपने चालू किया ये, तो तभी आपने क्या क्या practices किए marketing में, क्योंकि marketing बहुत evolve होते गया. At that time, na, when I started, na, there was nothing like that of network marketing was not there. I would say before 15 years back, na, or maybe अगर रहेंगे तो I was not in touch with that. Then after some years, I joined some networking groups. Networking groups, okay. Networking groups, like networking clubs. BNI and all like BNI, Rotaries, and Saturday clubs. And I joined, and it gave me very good knowledge. I met people, and we had great knowledge sharing. And we had business also over there. Oh. This is something to learn for every new business person, क्योंकि जिसको नया धंधा बिठाना है तो उसको पहला तो यही है कि कस्टमर कहाँ से मिले या फिर कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाए. See, already I was having contact in my industry, but there was something which I wanted to explore. And these were the platforms where I explored. I met people, I had knowledge sharing, and I had new client base also over there. You know one thing? See, I'm a sporty person. Now, I will give you one example. Once I was traveling to Khargar. I was traveling to Khargar Hills in the morning. I was traveling by my bicycle, and some colleagues were there from Dombivli with me. And there I met some Khargar cyclist. Okay. And then there also business networking was there.
Really, I met one cyclist who was an architect, and that generated me business. वाह So business is everywhere. बिजनेस इज एवरीवेयर, दैट इज ट्रू. इट इज ओनली कि घर बैठे बैठे नहीं होगा, नहीं होगा. You हमको should बाहर have to निकलना बाहर चाहिए. निकलना पड़ेगा. जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना वो बिजनेस एक्सपांड होते जाएगा. Yes, definitely. So now as things are quite evolved, सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है. So what are your views कि अभी ये डिजिटल जो हो रहा है, तो how are you planning to expand in this digital world? See, the world is changing. If you stop, you will be left behind. It is just like riding a bicycle. हाँ, it is आप just रुक like- गए तो आप गिर गए. गिर गए. And people will go. लोग आगे रुक जाएंगे. हाँ. वो आपके लिए रुकेंगे नहीं. हाँ. So मैं आपको बता रहा हूँ, आज से सपोज 20 साल पहले हाँ. मार्केटिंग की हमारी स्टाइल मैं बताता हूँ. हाँ. हमारे डैडी, हमारे अंकल, मेरे बड़े भाई ये क्या करते थे, जैसे गणेश फेस्टिवल आया, हाँ. हम लोग बैनर्स देते थे. हाँ, हाँ, हाँ. We spend on that advertisement. हाँ. Okay. Then गणेश उत्सव आया, सेम. देन कई बार हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड देते थे. ये मैं आपको 20 साल पहले की बात लीफलेट्स, बता रहा हूँ. पैम्पलेट्स जैसे. हाँ. अब मैं आपको बात बता रहा हूँ 7-8 साल पहले की. हाँ. मैंने बिजनेस नेटवर्किंग ज्वाइन किया. हाँ. मैंने काफी क्लब्स ज्वाइन किए. वहाँ पे मैं बिजनेस नेटवर्किंग करता था. हाँ. द वे ऑफ एक्सपेंडिंग अवर बिजनेस और द वे ऑफ मार्केटिंग इट वाज. एंड राइट नाउ आफ्टर पोस्ट कोविड, हाँ. Instagram ads, Instagram page, Facebook page, WhatsApp business, that WhatsApp status, हाँ. 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 making videos, having YouTube channel. All these are the things which are in the current streamline and which we are doing. वो तो अभी आई गेस पोस्ट कोविड डिजिटल का बहुत ज्यादा बूम है. बहुत ज्यादा मीन्स बियॉन्ड इमेजिनेशन. मैंने कभी सोचा नहीं था कि बेंगलोर से कस्टमर मुझे मिलेगा. ओ सही है. दैट इज बिकॉज ऑफ द तो वो रीच बढ़ गया आपका कि आपका एड यहाँ से बैंगलोर तक लोग देख रहे हैं. and then- last week we had supplied to one customer from Kolkata. ओह. So ऐसा लग रहा है ये दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है. दुनिया बहुत बड़ी है, हाँ. बट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स दुनिया ऐसा मीन्स कहाँ से कोई भी कोई भी कांटेक्ट कांटेक्ट कर सकता है. वो रीच बढ़ गया आपका. रीच बढ़ गया. वो देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज पर द जमाना, एज पर द टाइम ना, हाँ. शुड बी गेट कन्वर्टेड. इट इज वो तो है. वो It is a ग्रोथ must. चाहिए, इट इज अ मस्ट. नहीं तो वहीं पे अटक के रह जाएंगे. Right. सो एवरी बिजनेस दैट वी डू वी फोकस ऑन 4 थिंग्स कि वो बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसका वीकनेसेस क्या है. हर बिजनेस का एक वीकनेस होता ही है. उस एरिया में अपॉर्चुनिटीज क्या है उस बिजनेस में, और थ्रेट्स मतलब चैलेंजेस क्या है वो बिजनेस में. सो इफ यू सी योर बिजनेस इन दैट वे, तो कैन यू नेम एनी स्ट्रेंथ्स ऑफ ए बिजनेस? माय स्ट्रेंथ, माय टीम इज माय स्ट्रेंथ. ओह. हाँ. My team is dedicated, and the thing is that, see, I am a passionate person. Na? हाँ. I think I am a passionate person. I don't know what people think. And the same way, when I see to my team, na, हाँ. they are also passionate like me, exploring new things. हाँ. Then not just selling the hardware, yeah, giving solution to customers. Na? वो ज्यादा इम्पोर्टेंट. That is important. Money making should not be our goal. That is our thought. हाँ. Giving proper solution, satisfying our customer will be, you can say, लंबी रेस का घोड़ा. सही बात है. टोटली. Now challenges. Now when you talk about challenges ना, देखो पापा कहते थे कि बेटा डे बाय डे कंपटीशन बढ़ने वाला है. हाँ. तो उसका मतलब कि you should be prepared. ठीक है. तो आज उनकी सब बातें याद आती है, और ये रियलिटी फैक्ट है. देखो आफ्टर कोविड में आपको बताऊंगा तो ऑनलाइन बिजनेस बढ़ गया. B2B बिजनेस था, अब B2C का बिजनेस हो रहा है. हाँ. डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स To कंज्यूमर्स customers, को अप्रोच कर रहे हैं. तो हमारे फोरफादर ने बताया था कि ये सब पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये सब होने ही वाला है. हाँ. और इससे डरना नहीं है, इससे टैकल करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने हाँ, तो- he had the vision back then when even digital was not Not present. that, but he told me, हाँ. be prepared. हाँ. Be prepared. You are a businessman. You are having business in your blood. हाँ. You should tackle all the things. सही So, बात है.
we are doing. हाँ. We are with the world, with हाँ. the time, and we are doing well. I think so. What opportunities you see now ahead? Like suppose आज से हम 5 साल आगे देखते हैं, तो what opportunities you see कि you can explore more? See, opportunities like that के हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जैसा भारत हार्डवेयर एनएक्स पहले एक सिंगल गाला था, अब डबल गाला हम लोग बड़ा शोरूम बना दिया। वैसा हम प्लान कर रहे हैं कि एक नए लोकेशन पे इन द न्यू एरिया वी विल मेक वन आउटलेट एंड वी आर ऑल्सो सीकिंग फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। हाँ. बट उसके लिए हमको एक अलग ही टीम बनानी है, उसके लिए हमको एक अलग ही पार्ट बनाना है, बट दैट इज ऑल्सो आवर विजन। And the main reason right now, as a showroom, as a retailer, is that to increase our footfall. हाँ. Footfall of our customers. अब देखो footfall खाली ऐसा नहीं होता है कि भाई कस्टमर आया और वो footfall हो गया। बराबर. फुटफॉल ऐसे भी होता है जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे अपना एक वीडियो अपलोड किया, कस्टमर बैठा हुआ है सांता क्रूज में एंड ही सॉ माय शोरूम एंड देन he gives his requirement. I will tell that is also in footfall, but that is a digital footfall. I really like this term, digital footfall. So anyways, our main target is to increase our footfall. This is our goal. सही बात है. So then you have that digital vision also. Yes, ये हमको definitely. digital में क्या करना है? Yes. Proper आगे. We have to. That is great. And difficulties are there in it comes in business, like you know, I will set you an example. After COVID the market suddenly changed. How it changed? The old varieties which were there in market they suddenly stopped and new varieties came. New finishes came in handles. नया ट्रेंड है, नया चीज़ है उसमें. 2020 के बाद में बहुत सारी ऐसी फिनिशेस आई जो ट्रेंड में आ गई और वो 2000 पहले वाली रह गई। सो हमारे लिए सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हमारे पास डेड स्टॉक रह जाता है, जिसको जो डेड हो जाता है। बराबर है, बिकॉज Stock है. ट्रेंड से निकल गया. स्टॉक है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ. सो ऐसा नहीं होता कि जो मैन्युफैक्चरर से आप लेते हो ही बाइज बैक दैट थिंग. नो ही डजंट। फिर हमें अपना कॉस्टिंग अंडर कॉस्टिंग होके भी वो प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि जितना दिन ज्यादा रखेंगे उतना वो लायबिलिटी बनती जाता है. अब जैसे दूसरे अगर मैं ऑब्स्टेकल बताऊं, मैं आज की तारीख में अगर हम लोग फेस कर रहे हैं ना, दैट इज ए सडन राइज इन द प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, सो वहाँ पे कैसा बायर्स जो है ना वो उनको तकलीफें होती है। So that is a thing, but we tackle all the things. It's like, you know, for me, from my angle, it's like riding a cycle and riding it on a ghat section. It's like up climb. But after that ना, देखो एक चढ़ान चढ़ने के बाद फिर डाउनहिल आता ही है। Same in business. Difficulty comes. How to tackle it? And after difficulty, there is a smooth ride. There is a smooth business. So you have that mindset, but I guess cycling ने बहुत कुछ सिखाया है हमें. साइकिलिंग ने बहुत कुछ सिखाया कि हर एक अपहिल के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिसेंट आता है जहाँ पे एकदम इजी हो जाता है कि हाँ रिलैक्स हो जाता है। सेम इन दैट ऑफ बिजनेस आल्सो, डिफिकल्टी कम्स, हाउ टू टैकल इट, हाउ टू ओवरकम इट, that is a part. That is a part of it. That is truly a part of it. And it will be coming, yeah. If it doesn't come na, then what is the meaning of doing business? Means एक challenging business होना चाहिए। चैलेंज होगा तो मजा आता है। मजा आता है। नहीं तो इजी तो फिर उतना नहीं है। मतलब फिर वो पैशन कम हो जाता है। पैशन कम हो जाता है उसमें। वो कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, there is a mindset in people कि धंधा खाली गुजराती मारवाड़ी यही करते हैं। नहीं। या फिर वो भी सेट है कि उनको ये धंधा ये वो लोग करेंगे। In my industry, the people from Uttarakhand, the people from Maharashtra itself, who are inspiration to us. They are not Gujarati, they are not Marwadi. देखो ऐसा नहीं है, ये अपनी सोच है।
बस मैं अपनी बात करूँ तो मैं उन लोगों को ढूंढता रहता हूँ जो मुझे इंस्पायर करते हैं हाँ. एंड नॉट एवरी टाइम दे आर गुजरातीज और दे आर मारवाड़ीज हाँ. दे आर फ्रॉम साउथ ऑल्सो दैट इज नथिंग लाइक क्योंकि जो कोई नया धंधा डालने का सोचता है तो पहले तो उसके दिमाग में वो रहता है धंधा अपना ये नहीं है. देखो यार अभी ऐसा है कि अब जो जमाना है ना हाँ. अब जमाना है एंटरप्रेन्योर्स का हाँ. and they doesn't have any religion, they doesn't have any caste, they doesn't have. उल्टे का मुझे इन नए लोगों से काफी कुछ सीखने मिलता है. आई एम अपडेटिंग माई सेल्फ. हाँ. That is main thinking. By new people, you're learning new things. Yes, in yes. that. So, as we wrap it now, what is one tip you would like to give to any new entrepreneur out there? One tip for ऑलमोस्ट 4 डेकेड का एक्सपीरियंस पकड़ के चलो. आपको 1 डेकेड 13 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया इसमें. देखो मैं एक ही चीज को मैं शायद मानता हूँ और मैंने आपको पहला भी ये बताया है, वो है टीम वर्क. विदाउट टीम वर्क इट इज नॉट पॉसिबल. सो आई विल टेल ऑल द पीपल that my team is my success story. My team is my strength. दिस इज अ रियली बिग थिंग कि many of us think कि धंधा करना है चलो अकेले कर लूंगा. नहीं, it is not. सब It कुछ is not like that. It is not like that. this was one big learning curve for me also because the things that we explored right from the beginning, like 40 years पहले कैसा बिजनेस था, कैसे ग्रो हुआ, मार्केटिंग कैसे चेंज होते गया. तो I guess even our viewers will be learning new things from this. And if there'll be more questions, then you can let me know. So we can have another session also with that. Definitely, I will get back to you. हाँ. I will get back to you. And even you all can comment in the section कि आपको कौन से questions पूछने हैं, be it in this industry or any other industry. Sure. So we can get back to you about that also, and then we can answer those questions. Definitely. So this was it for this episode, and then ahead we'll see कि हम लोग और इसमें क्या क्या add on कर सकते हैं. Sure. It was great talking to you and also knowing about your business, and we'll also let our customers know about, like, our viewers know about what exactly your business is and then how you have grown. Now, I had a very great session. हाँ. Thank you very much for this. Thank you so much. Thanks a lot. Yeah, bye. So we'll wrap it up over here then.